Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 52. Now we have been learning regarding the types of reagents in the reaction mechanism. And in earlier two videos, do watch them, we have explained, I have tried to just explain all that two types of reagents in detail. Nucleophilic reagent and electrophilic reagent. Now some questions can be asked on that both in the subjective paper as well as in the objective MCQ. Okay, what are that questions we'll try to learn. Giving justification, categorize following molecules ions as nucleophile or electrophile. Some of the examples are mentioned here. And we have to make two categories, one nucleophile, other electrophile. ओके तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट द नॉलेज शुड बी परफेक्ट. यहाँ पे एक्चुअली चार्जेस वगैरह दिखाया, इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखाई है, पर कई बार इलेक्ट्रॉन की पेयर नहीं दिखाएंगे. चार्जेस तो खैर दिखाना पड़ेगा बट इलेक्ट्रॉन की पेयर नहीं दिखाएंगे, बट स्टिल यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई. अगर हमको सही तरीके से मालूम है, इफ यू आर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ nucleophile and electrophile, I'm sure you will be able to solve that. A nucleophile is that which is having negative charge. A negatively charged species or electron rich species or a species which can give electron pair to somebody which can attack on the electron deficient center is known as nucleophile. तो चलो यहाँ पे कौन कौन नेगेटिव चार्ज के वो पहले देखेंगे, या जिसको इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, पर्टिकुलरली HS माइनस. ओके, सो दिस विल बी ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज. C2H5O माइनस, दिस विल बी ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सो दिस इज व्हाट इज दैट nucleophile. Then electron pair is there shown, but I told you that many other times that will not be shown. Nitrogen is having that excessive electron pair, so this is also nucleophile. यहाँ पे तो पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसके एग्जैक्टली रिवर्स. ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज और विच can just take or accept the electron pair from nucleophilic center will be known as electrophile. जिसको इलेक्ट्रॉन की पेयर अट्रैक्ट या एक्सेप्ट करना आता है, दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. इजंट इट? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. तो यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल बता रहा हूं मैं, यानी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग जो बॉक्स में दिखाया है वो न्यूक्लियोफाइल है. वहां पे तो आंसर लिख लो आप, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए. और जिसको मैं राइट कर रहा हूं ऐसा, यस, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल. जिसको राइट कर रहा हूं वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. वेरी सिंपल देन. तो अब देखो, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, CH3C प्लस डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोफाइल, C प्लस है यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल. सो राइट जो किया है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, और जो बॉक्स में रखे हैं वो क्या है, दे आर न्यूक्लियोफाइल. सो डू प्रिपेयर द आर्टिकल्स प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स विथ फुल कॉन्फिडेंस, I am sure. Now another question. Identify electrophilic center in the following reaction. Now electrophilic center means electron deficient center. Electron deficient जहां पे sextate of electron हो जाएगा, और partial electron deficient center है यानी with sextate of electron, और that carbon with या स्पीसीज विथ डेल्टा प्लस चार्ज, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. अब देखो हम इजीली देख सकते हैं
Now this oxygen can take this electron pair because of the more electronegativity. अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की पेयर लेता है तो ये माइनस हो जाता है. ओके, तो पॉजिटिव कौन रहेगा यहाँ पे? C प्लस. यानी दिस विल बी द व्हाट यू से दैट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो if double bond is broken and oxygen is taking both the electrons, then carbon will lose its electron and carbon will get positive charge, and that's why the consequence will be that this carbon will be called as the electron deficient center. इस कार्बन को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर कहेंगे. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल. अब देखो ये दूसरे इसमें भी वैसा ही है. If nitrogen will take the electron there, then nitrogen will be getting negatively charged species there, and now this carbon will be having, okay, this carbon will be having that electrophilic center. वो electrophilic center हो जाएगा. That electron deficiency वहां पे हो जाएगी. और ये CH3I में क्या होने वाला है? That iodine will take that electron pair towards itself. So iodine will be getting that delta minus charge here. यहाँ पे delta plus charge है कार्बन को. So this carbon will be definitely the electron accepting center जिसको हम कहेंगे, क्योंकि positive charge उसको आ रहा है, and that will be called as electron deficient center, and so that will be the answer there. Very simple. Okay. So try to learn very simple examples I am putting here, which are having electrophilic centers. They will have partial positive charge due to polarity. Okay. So this carbon with asterisk will be called as electron deficient centers, and therefore they are called as electrophilic centers. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. कहने का मतलब ये है, the electro that particularly electron richness वहां पे नहीं है, electron deficiency है, that's why nucleophile can attack there. और वही हम देखेंगे निचले रिएक्शन में. देखो आप, ये क्वेश्चन दिया है, what is the type of reaction. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, particularly this carbon double bond O when breaks, okay, O will be getting negative charge, and just बीच में की मैं एक पोजीशन लिखूंगा यहाँ पे, कार्बन will be getting positive charge, oxygen will be getting negative charge. Double bond is broken. Why? ये बीच वाली पोजीशन मैंने लिख दी है. Why? Because oxygen has taken both electrons from the shared pair, so oxygen is getting negative charge now, and carbon is getting positive charge. So on this positive charge, any nucleophile can attack. In HCN, who is nucleophile? Can you tell me? Cn minus is electrophile. Nucleophile having richness of electron, and H plus is electrophile. So here Cn minus will attack on the carbon because of that, and we will get this product. And O minus will donate its electron pair to the hydrogen. That hydrogen is H plus. H plus will get added on oxygen. So who is getting added on carbon there? A bond will be formed between the carbon and nucleophile. Therefore, it is known as nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. ये ध्यान में रखो. इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब जान लो. बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन दैट कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाउ आफ्टर दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन. C double bond O is broken in such a way that oxygen has taken electrons, and that's why particularly O minus will be formed there, and then carbon will be positively charged. On that, nucleophile will attack. Electrophilic center will be formed there. तो इसलिए ऊपर भी हमने जो दिखाया वो ऐसा ही रिएक्शन है. ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, on which nucleophile can attack, जो मैंने कहा था.
सो वो ऊपर वाला भी आपको समझ में आएगा, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Then what is the another, that CH2 double bond CH2 plus H plus we get CH3 CH2 minus. यानी यहाँ पे क्या हो गया है देखो, this CH3 CH2 pair has been taken by one carbon out of the two. Okay, and that has got the negative charge. That has got negative charge, to which that H plus will get, at the other carbon will get positive charge. CH3 CH2. तो यहाँ पे H plus ion जो है, that will stimulate this carbon to take the electron pair, and then H plus has been added on that carbon. Okay, because that carbon has taken both electrons. और ये कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से this carbon is positively charged. So hydrogen has been added on that CH2 minus single bond CH2 plus, ऐसा हुआ था. तो ये H plus ion has been attacking on that. So this is known as electrophilic addition reaction. Electrophile is getting added, and that's why called as electrophilic addition reaction. So this may be asked in the examination like this, and this is very, very helpful to the next topics, because we have to learn the reaction like this. Nucleophilic substitution, electrophilic substitution, nucleophilic addition, electrophilic addition. तो हमें ये मालूम चाहिए. इन शॉर्ट मैं एक ही कहना चाहूंगा आपको, जो अट्रैक्शन हम देखते हैं नेचर में मेल फीमेल का, वैसा ही है. That electrophile is positive, nucleophile is negative. So electrophile will attack on the nucleophilic center in the polar reaction, and nucleophile will attack on the electrophilic center. दोनों तरफ से उतनी है attraction, affinity. खाली electrophile बदनाम होते, but actually both are equally responsible for that. Electrophile will attack on the negative center, and nucleophile will attack on the positive center. इतना ही ध्यान में रखो, and you will get the concept clear. So definitely I am confident that your concepts have been cleared. This is really very important part. बार बार उसको रिवाइंड करके जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, देख लो कि क्या है एग्जैक्टली मैंने कहा. इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट अच्छी तरह से लर्न करो. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल लर्न inductive effect, electromagnetic effect, and resonance effect. So do like and share this video. We shall meet again in the next. Thanks a lot.